Okay, everyone. So, again, welcome to CS Professional, last stage, and then you can call yourself as CES, Company Secretary. So, this paper number three used to be paper number four in group two. Now it is paper number three, so part of group one itself. And I would say one of the easiest subject compared to all the other subjects. One of the easiest, I don't mean to say that koi bhi subject tough hai. When I say easiest, it simply means it is easy to score in this subject because see, every subject has their own concepts. कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं हर एक टॉपिक हर एक एरिया अलग है राइट समथिंग इज गोइंग टू give you the highlight of stock market, securities market, company law, somewhere about merger amalgamation, somewhere about funding, somewhere about compliance management. But this subject is comparatively, easy to score. And the best part of this subject is if you see the old course and new course is its first batch, June 2024. But when I say new course for my subject, I won't say it is new as such. It is like 85 to 90% same. 85 to 90% same as previous book, except one, two chapters they have deleted and one, two chapters they have added. But it's more like kind of, management they have done that some of the chapters were given separately. Now they have combined. So overall, if this subject is read from, if you read from old book, then also 85% content is same. So it's fine. So this subject, compliance management, audit and due diligence, ये क्या है and क्यों है? And practically, if I say economic law, so there will be economic law. If I say company law, there will be company law. Security law again. Something मैम specifically subject के नाम से पता चलता है कि अंदर क्या होगा. And if I say corporate governance, you know that there will be something related to corporate compliances under LODR and company law. But then this words, can I say अगर मैं audit को थोड़ा side कर दूं, then you cannot actually give me any specific answer कि ये क्या subject है और कौन से topic related है. Can I say every law so far you have learned in executive सब कुछ यहाँ पे आ सकता है. If I say compliance management can be regarding anything. Company law हो सकता है, economic law हो सकता है, foreign law हो सकता है, कुछ भी हो सकता है that is applicable to your company. Yes, and I would appreciate if answers are coming through the reaction mode or chat box. Right now, I'm not giving you mic. So basically, there's three words: compliance management, audit, and DD. So थोड़ा सा आगे, just here, check. Part 1, that is all about compliance management, 40 marks. And part 2, audit and due diligence, 60 marks. 7 chapters in part A and rest of the chapters in part B, that is still 16. So these three words. Now, three open-ended words are given, but somewhere this word is having like total 7 chapters. This word audit part B में 80% जो है ना 80 to 90% is all about audit and रहा DD is like 20% or maybe 10% you can say in part B that is all about due diligence. तो ये तीनों जो words है उस पे पूरे chapters बने हुए हैं काफी बड़ा concept है but these three words are very generalized words. So अगर हम इसको थोड़ा सा meaning दें compliance management exactly क्या है? So for example, ma'am, if I'm supposed to file return for deposits, what is the form number? Can I say DPT3? Right, ma'am, if I'm supposed to register my charges, can I say CHG1? Yes or no? So if deposits का कोई भी concept, कोई भी section अगर मेरी company को applicable है, if I'm supposed to file this form, so ma'am, what is the last date? Who will do so? By what time? फीस क्या है कितना भरना पड़ेगा कौन सा अकाउंट यूज करना है मैम पे नाउ करना है कि पे लेटर करना है राइट मैम इस फॉर्म पे सीएस प्रोफेशनल का कोई प्रैक्टिसिंग का सिग्नेचर लगेगा नहीं लगेगा कैन आई से इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस सो दैट आई फाइल दिस फॉर्म ऑन टाइम विदाउट बीइंग डिलेड ये मेरे लिए जो इसका जो भी स्टेप मैं लूं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मैनेजमेंट बोलते हैं बट बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ समथिंग can I say will become compliance management?
हेलो, यस और नो? क्लैरिटी? I am not saying only Companies Act, right? If it is about, let's say, FCGPR, if you are bringing money from foreign, FDI in India is happening and you're supposed to file this form within 30 days, right? Then also it is nothing but compliance management. Now, can I say compliance management is gonna be different from company to company, professional to professional, article to article, I mean interns, right? Anybody, ये सबके लिए अलग होने वाला है. आपका और मेरा compliance management कभी सेम नहीं होगा, because how I manage things, how you manage things depends. कुछ लोगों को लास्ट मोमेंट पे ही काम करने की आदत होती है, एंड देयर आर सम पीपल हु आर प्रिपेयरिंग वेल इन एडवांस, बट डजंट मैटर ना, कोई लास्ट में पढ़ के भी पास हो गया और कोई 6 महीने अच्छे से पढ़ के पास हुआ. क्या आप दोनों में अभी कोई डिफरेंस है? सेम बैच में होना. Simple. Are you getting my point? So compliance management is never gonna be same for two professional, two companies, two people. It's gonna be different. So never follow anybody's compliance management chart which is well prepared. Clarity with the first word. What is compliance management? Management वही जो आप करते हो general day to day life में. But अगर वो compliance के related हुआ, then it is compliance management. Can I say this is more like about presence and future? आप अभी प्रेजेंस में कहाँ हो, what you should be doing in future, उसका proper management. So somewhere this is focusing on present and future. Yes or no? Are we together? Yes? Okay. Just one thing. अब मैं आपको सी दिस इज नॉट एग्जीक्यूटिव एंड आई एम श्योर नो डाउट आपका आर्टिकलशिप बाकी है, आप सून करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एग्जाम. बट कैन आई गो बिट इनटू मार्केट ऑल्सो? थोड़ा आपके लिए एक्सटेंड होगा, चलेगा? थोड़ा प्रैक्टिकल जाए, चलेगा? थोड़ा ऑफ बीट टॉपिक से बाहर जाते हैं, जस्ट टू गिव यू अ बेसिक हाईलाइट व्हाट हैपेंस इन मार्केट. लेट मी टेल यू, जब से ये वर्ड आया ना, न्यू कंप्लायंस मैनेजमेंट, मे बी इट्स लाइक मैम कुछ नया नहीं है, वी वर नोइंग दैट दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू, ये फॉर्म इस टाइम पे भरना है. बट अगर उसको एकदम अच्छा सा नाम दे दिया, compliance management. Okay, simple example. Let's say you know that everybody should be having proper diet, proper exercise, तो हेल्थ अच्छा रहेगा. सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, काइंड ऑफ सबको पता है ना. पर अगर मैं ऐसा लेके आऊं 15 days हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्या ना ऐसे लोग उस पर डिग्री भी लेने लगेंगे? दिस इज टूडे सिनेरियो ना. खाली तुम उसमें कुछ ऐसा नाम डाल दो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू. बस कुछ ऐसा ही हुआ. थिंग्स वर वेरी सिंपल. वैसा ही चलता था कि भाई ये फॉर्म भरना है, विद इन टाइम करना है, एंड देन न्यू वर्ड वाज इंट्रोड्यूस, कंप्लायंस मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स हमारी इंस्टीट्यूट लेके आई हमारे लिए, एंड विद दिस इज मोर लाइक एक फील देता है, वी आर अ कंप्लायंस मैनेजर ऑफ दिस कंपनी. We are a firm who's managing compliance of this company. Corporate compliance management plan we are making. We are, specialists in preparing program for compliance management of so and so company. अच्छा लगता है ना? थोड़ा प्रोफेशनल लगता है ना? और इस प्रोफेशनल का सीधा पैसा हो गया 10 times. सो प्रैक्टिकली चलता क्या है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो, रिटेनरशिप, अवेयर और नॉट, चैट बॉक्स, यस और नो, दैट्स ऑल. रिटेनरशिप, एनी आइडिया? ओके, फाइन, कुछ लोगों को पता है, चलो ग्रेट. ये क्या है मैम? सो रिटेनरशिप इज a concept which is very popular for a practicing professional. So PCS, PCA बोलो, I mean CA, PCMA, cost and management accountant, ये practicing के लिए ज्यादा है, not for job people, because job people are definitely having employment in that one company itself, तो उनके लिए ये concept नहीं है. So if I talk about PCS, PCN, PCMA, अभी आप सोचना, if I am, let's say, giving you a service like, आपको DPT3 फाइल करवाना था, आप मेरे पास आ गए. अभी आपको ईयर एंड हो गया, यू वांट एनुअल रिटर्न MGT7, आप मेरे पास आ गए, मैंने साइन करके दिया. मैम ईयर एंड हो गया, प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करके दो, AOC4, ये सब करके दिया. ओके, सो कैन आई से whenever there is a one time work, you're coming to me, paying me, I'm giving you the form or certification and something. मतलब ये हो सकता है कि आप एवरी टाइम कोई फॉर्म लेके आए, लेट्स से आई हैव चार्ज 3000 रुपीज, समवेयर 2000, 5000, ऐसा करते करते मे बी साल के अगर आपने 10 फॉर्म जैसा कुछ करवा दिया, अराउंड 30 to 50,000 आई हैव अर्न फ्रॉम यू. सिंपल एज दैट. दिस इज अ नॉर्मल थिंग. पर अगर इसको ही मैं ऐसा बोलूं दैट सी,
anyway you know that your company is having different type of compliances आप मेरे पास लेके आते हो. आई एम चार्जिंग यू वन बाय वन जो भी फॉर्म आता है. इससे बेटर एक काम करते हैं. लेट्स गो फॉर द रिटेनरशिप. इट्स मोर लाइक इन हाउस. यू पे मी 3 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कंपनी. कोई 3 लाख ऐसे ही नहीं देगा, राइट? अगर प्राइवेट कंपनी है तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम इवन 50,000. यू नेवर नो. सो 3 लाख रुपीज, जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट एज अ बेंचमार्क. 3 लाख रुपए डिसाइड करते हैं. एवरी 15 days मेरे यहाँ से 2 लोग आएंगे मैम, आपकी कंपनी को विजिट करेंगे. दे विल सी द रजिस्टर्स, सी द रिकॉर्ड्स, वट एवर फाइलिंग इज सपोज टू बी डन. जो भी सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होंगे सब इसमें आ जाएगा मैम. 3 लाख फिक्स. क्वार्टरली पे करना है, मंथली पे करना है, वॉट एवर इट इज. रिटेनरशिप करते हैं. कोई भी एडवाइजरी हो गया, एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक थिंग. लाइक स्पेशल थिंग जैसा कुछ आया, मर्जर करना है, ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना डू मर्जर फॉर दिस 3 लाख रुपीज. वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. दिस इज मोर लाइक अ स्पेशल टाइप ऑफ थिंग. Buyback करना है, no, I'm sorry, buyback is not included here. So basic type of compliances and everything, I'll come, I'll see, I'll advise. आपको मैं एक चार्ट भी बना के दूंगी ताकि आपका कुछ भी मिस आउट ना हो. It's more like I'm now your in-house doctor type. ऐसा तो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, ऐसा फैमिली प्रोफेशनल. एंड दैट इज व्हाट कंप्लाइंस मैनेजमेंट इसकी वजह से बूम पे है, क्योंकि ये रिटेनरशिप कॉन्सेप्ट के साथ चलता है. नाउ यू थिंक इफ यू हैव जस्ट 10 clients, 10 only, and having retainership. So can I say this 10 clients जिसको आपको अच्छे से डील करना है, ट्रीट करना है, 15 दिन, 10 दिन, क्वार्टरली, वीकली, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड वर्कलोड ऑफ द कंपनी. आप वहां पे जाओ, चेक करो. ऑडिट अगर एप्लीकेबल है, ऑडिट भी करके दोगे आप, रिपोर्ट उसका भी दोगे. एंड अकॉर्डिंगली वॉट एवर कंप्लाइंसेस, उसके वाइज मेरा रिटेनरशिप फीस होगा. एंड चिल, कोई नया इंसान नहीं, बिकॉज सी दिस इज नॉट समथिंग, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ मैं कि भाई आप आ गए, मैम प्लीज एक लेस का पैकेट दे दो, और आपने दे दिया, डजेंट मैटर हु दैट पर्सन इज. कि नहीं से यहाँ पे ट्रस्ट पे काम होता है. बिकॉज लेट्स से अगर कोई मेरे पास नया क्लाइंट आ रहा है, आई डोंट नो दैट क्लाइंट, आई एम जस्ट आस्किंग हु यू, हाउ यू came to me, how you reached to me, who referred you. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन में, बिकॉज वी आर डीलिंग इन लीगल मैटर्स. कि ना ऐसे किसी को साइन करके देना बिना सोचे समझे, मे भी मैंने 25,000 रुपए लिए हो सकता है मैं भी कोर्ट के धक्के ही खाऊं बाद में. पॉसिबल है ना, इन आवर फील्ड यू नेवर नो, कंपनी फ्रॉड निकली. Yes, you have to explain, you have to go to court. So basically, we believe in mouth publicity more. We do believe in the references more compared to directly dealing with someone. And that's the reason retainership is one of the best concept. जहाँ पे compliance management आता है, फिर उसमें सब करके देना पड़ेगा, register से लेके everything. So this is, I'm not checking what is done or not. I'm doing everything. It's more like, have you heard that word? Management के कुछ steps होते थे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. कुछ याद आया जो आपने कभी मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़े थे? राइट, सेम थिंग. आई एम गोइंग टू सेट सम स्टैंडर्ड्स. थोड़ा उसको हम लोग कंपनी को बताएंगे ये करना है, फॉर्म्स भरेंगे, रजिस्टर भी देंगे, सर्टिफिकेशन भी करके देंगे. आई ट्राई माई बेस्ट कि इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आए, आई एम देयर. दिस इज कॉल्ड compliance management. It can be done through third party professional, that is independent practicing professionals. और मैम कंपनी में सीएस रखा तो है, उसको हम सैलरी किस बात का दे रहे हैं? फाइन, सो वो सीएस करके देगा. नाउ दैट इज अप टू यू. सो इट्स नॉट कंपल्सरी थिंग टू बी डन बाय प्रोफेशनल हु इज प्रैक्टिसिंग. It is somewhere done by even the person who's doing job there. So can I say study, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी every student is doing here study management program. Can I say आप of course कर ही रहे हो, उसका खाली नाम नहीं दिया. You have that schedule preparation program too. खाली हम उसको फैंसी नाम नहीं दे रहे, कर तो आप भी रहे हो ना. That is compliance management. Are we clear? Are we clear with the first word? What is compliance management? Hello? Yes? Only one word, compliance management. And उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं सब्जेक्ट पे अभी भी नहीं हूँ. आई एम जस्ट डीलिंग विद द नेम ऑफ द बुक. राइट, हम अभी किसी भी टॉपिक पे नहीं है, जस्ट ओपन एंडेड. सेकेंड वर्ड पे मैं जा रही हूँ, ऑडिट. अ वेरी वेल नोन वर्ड, सबको पता है क्या है मैम. ये वो है कि जहां पे हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं. कैन आई से दैट? गलती निकालो बस, दैट इज ऑडिट. यस, हम यहाँ पे गलती निकालने वाले हैं, टोकने वाले हैं. We are going to find that problems and we are going to report it to people that see this is the thing. So this is, can I say, a very negative kind of thing in a way. Yes or no? Okay. Be honest enough and tell me, जब हम वर्ड यूज करते हैं ऑडिट,
कैन आई से समवेयर दिमाग में नेगेटिविटी ही आता है कि इट्स मोर लाइक अ फ्रॉड फाइंडिंग एक्सरसाइज. कभी किसी को ऐसा है कि यार ऑडिट से बहुत फायदा होगा? एवर? एनीवन? कैन आई से दिस वर्ड इटसेल्फ इज मोर लाइक अ नेगेटिव साइड ज्यादा दिखता है कि हमको गलती निकालने की है, फ्रॉड निकालने का है. यस. है किसी के माइंड में पॉजिटिविटी? मैम ऑडिट करेंगे ना तो डायरेक्टर को पता चलेगा कंपनी में क्या सुधारने की जरूरत है. क्या ये थॉट जनरली आता है? या बिकॉज यस करेक्ट. सो मैं कहीं ना कहीं इनकम टैक्स, अकाउंट्स के गफले, विंडो ड्रेसिंग, रोजी पिक्चर दिखाना, ये सब बहुत चलता है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट. सो ऑडिट क्या है? वही जो आपको पता है मुझे ही पता है, सेम थिंग. मैम हिस्ट्री हो चुकी है, काम हो चुका है, आई मीन कंप्लायंसेस हो चुके हैं. अब वो कितने डिसेंटली कंप्लायंट है, या कंपनी कंप्लायंट नहीं है, नॉन कंप्लायंट है, या मैम कंप्लायंट दिख रही है पर खाली सरफेस से दिख रही है, अंदर कुछ और ही है मैम. यू नेवर नो, वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा. सो ऑडिट इज मोर लाइक हर पीली चीज सोना नहीं होती. हैव यू हर्ड अबाउट दैट? जो दूर से दिखे अच्छा है, जरूरी नहीं है अच्छा हो. You may have to cut it into pieces to see that what is the real scenario, and that is all about audit. It's more like fault finding exercise. पॉजिटिव साइड ये भी है. लेट्स से इफ आई एम द कंपनी डायरेक्टर और प्रमोटर, ऑफ कोर्स आई वांट माय कंपनी टू वर्क वेरी नाइसली, जितना हो सके अच्छे से काम करे, ताकि कंपनी में जो प्रॉब्लम है मैं उसको सुधारूं. हर प्रमोटर तो फ्रॉड नहीं होता, बट ठीक है हमारे दिमाग में सेट है ऑडिट तो फ्रॉड फाइंडिंग ही है. अब मेरा आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन. इज ऑडिट कंपलसरी, सेक्रेटरी ऑडिट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी? यस और नो, चैट बॉक्स. Yes or no? Is audit compulsory? Secretarial audit is compulsory for every company. Yes or no? You can even give reaction. It's fine. Okay. Fair enough. I'm expecting answer from everybody. Okay. Fine. No, ma'am, it's not compulsory. My second question. Is statutory audit compulsory for every company? Statutory audit done by practicing chartered accountant. Yes or no? Statutory audit is compulsory for everybody or no? Every company or no? Okay, fair. Okay, guys, answer is yes, of course. Private company है, 5,000 की भी company है ना, then also statutory audit is compulsory. Every company is supposed to go for statutory audit from practicing chartered accountant. But secretarial audit is not compulsory. And I'm sure you're well aware that secretarial audit concept was not there in Companies Act earlier. It came with Companies Act 13. राइट. एंड बिकॉज उसमें एक और लिमिट ऐड की गई, बोरोइंग फ्रॉम 2019, राइट, 18-19, फ्रॉम दैट ईयर द स्कोप इंक्रीज ट्रिमेंडसली. एंड ऑफ कोर्स एक सीएस प्रोफेशनल के लिए स्कोप थोड़ा ज्यादा हो गया, बिकॉज हर कंपनी पहले सेक्रेटरी ऑडिट में नहीं आती थी, अभी काफी कंपनी आती है. सो कैन आई से वन एक्स्ट्रा थिंग टू बी डन बाय सीएस इन प्रैक्टिस, स्कोप ऑफ कोर्स बढ़ जाता है. यस. सो ऑडिट ओपन एंडेड है यहाँ पे. देर आर सो मेनी ऑडिट्स दैट वी कैन डू, बट राइट नाउ माई फोकस इज ऑन सेक्रेटरी ऑडिट. एंड द वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑडिट, उसको काफी डिटेल में हमको समझना है. ये तो सिर्फ वर्ड है एक. ऑडिट कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ एग्जैक्टली दिस ऑडिट टू बी डन, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक. एंड एज आई मेंशन, पार्ट बी का 80 to 90% पोर्शन इज जस्ट ऑडिट. एंड नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट, ड्यू डिलिजेंस. बिफोर ज्वाइनिंग प्रोविंग्स कुछ क्वेश्चंस तो थे ना माइंड में, और शायद कुछ लोगों ने तो पूछे भी होंगे एडमिन से, स्टाफ से, फैकल्टी से, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, राइट. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप कन्विंस हुए तभी आपने प्रोविंग्स ज्वाइन किया. यस. व्हेन वी डू दैट काइंड ऑफ थीसिस, रिसर्च, एनालिसिस, जो भी बोलो, why we do that? Can I say we just don't want to regret something? मैं फोन खरीदने जा रही हूँ, of course I'll see the features. आप कार खरीदने जा रहे हो, you will see some things, right? You have certain level of expectation and then you'll check my expectations are matching or not. वो जो आप कर रहे हो before jumping into that transaction, उसको ही बोलते हैं due diligence. अब थोड़ा ध्यान से समझना. This word specifically is given here with the concept like, let's say ABC Limited is thinking to invest, purchase, take over, whatever it is, with the XYZ Limited.
Can I say this is a serious kind of transaction? Before going into transaction, you should know something. So इस transaction में घुसने से पहले better है कि जितना हो सके उतना पता कर लो इस company के बारे में. So this company is talking to this company. दोनों को कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है, इनको सेल करना है, इनको बाय करना है, राइट? बट बिफोर बाइंग आई वुड लाइक टू चेक. So if I'm entering in any shopping store और उनको मैं बोलूँ I want to buy this phone but I want to see that first demo, देखना है मुझे, फोन डेमो पीस दिखाओ. ऑफ कोर्स वो लोग देंगे ना कि मना करेंगे, सॉरी मैम ऐसे ही पैक लेना पड़ेगा. They will allow me to see the features or whatever I have in my mind. They'll tell me to go for it. Same way XYZ Limited is gonna give access of all the type of confidential information to this ABC Limited का जो भी प्रोफेशनल है. For what purpose मैम? Just to be sure कि इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना है कि नहीं, और जो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, रिव्यू हो रही है, अप्रेज हो रही है बिफोर एंटरिंग इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको हम बोलते हैं ड्यू प्रॉपर डिलिजेंस टू चेक. सो ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट में क्या फर्क है? कैन आई से ऑडिट इज लाइक कंपल्सरी थिंग दैट मुझे अपनी कंपनी का करवाना ही पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो. DD is not something that I'm doing for my company. Can I say somebody else is interested to do that DD for my company because they want to enter in my company's transaction or whatever it is? Can I say that? So DD मैं नहीं करवा रही हूँ, मेरी कंपनी का ही चेकिंग हो रहा है, पर कर कोई और रहा है. That is proposed buyer, acquirer. Are we clear what is DD now? Yes? Clarity कि DD क्या है? अब एक इंटरेस्टिंग चीज, डीडी एंड ऑडिट के स्कोप में ज्यादा फर्क नहीं होगा. थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली. अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, लेट्स गो फॉर सीएसआर ऑडिट. मैम आप सीएसआर ऑडिट में क्या चेक करोगे? ऑफ कोर्स सेक्शन 135 एंड सीएसआर के रूल्स कि भाई 2% हुआ, लिमिट क्रॉस हुई थी, यू नो, काइंड ऑफ थिंग्स यू विल चेक. यस मैम, ड्यू डिलिजेंस में अगर आप 135 का डीडी कर रहे हो तो कहना से यही चेक करोगे, सेम ही चेक होगा ना. यस, हेलो, चेकिंग का बेस तो सेम रहने वाला है, दोनों का पर्पस अलग अलग है. सो वन इज ऑडिट दैट इज डन बाय लाइक कंपनी through third party of course, and it is supposed to be given to people, while DD is a confidential thing happening between these two parties जहाँ पे एक buyer है, एक seller है, and it's like they want to sell the company, but मैम कंपनी खरीदने से पहले हर कोई देखना चाहेगा. तो मैम it's like what if ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ एंड इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी, उसका क्या? डोंट वरी, वी साइन एनडीए फर्स्ट, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट. ये साइन होता है, उसके बाद ही आपको डेटा एक्सेस करने मिलेगा, एंड देन यू विल डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट. एंड जब ये प्रोसेस चलती है तो उसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस. नॉट अ कंपल्सरी प्रोसेस, मोर लाइक अ चॉइस बेस्ड प्रोसेस. जिसको करवानी है वो कराएगा. Are we clear with the 3 words जिस पे अपनी पूरी बुक है? Clear? Okay, everyone. So starting with the subject now, you have introduction, what is audit, what is compliance management, and what is due diligence. Now starting with the subject, as per book, we have part A, part B. As I mentioned, part A is all about compliance management, but currently we are starting with part B. Now the beauty of this part B is, part A की अगर हम बात करें ना, that part A is having 7 chapters and every chapter is exclusive. So it's like I can start chapter number 4, I can start with chapter number 3, I can start with any chapter I want and having no connection, you know, with each other. So exclusive chapters hai. Well, part B, and specifically I'm talking about audit because in this part B also we have 2 different concepts. One is audit, one is DD, due diligence. And to be very honest, this audit part properly, agar hum, you know, as a faculty, as a professional, if I can teach now, you know, in a better way, because 2019 में कुछ आया. Before that, it was very difficult to deal with the audit subject because it's like secretarial audit सबको पता है, how to teach technique, there were no techniques. So it's like, you know, somewhere statutory auditor की ही techniques को यहाँ use किया गया, and that's how we were dealing with the students from 2013 to 2019.
And then institute also realized that everybody is having different mindset, different way of thinking, different way of understanding or experiencing law, and everybody would go as per their own depth of knowledge. They'll do audit. So it's quite possible the way I'm doing audit and you are doing audit, maybe it is going to be at different extent. The problem was हमारी reports कैसे same आएगी फिर. And ma'am, I'll always be able to prove that I have done audit to the best of my knowledge and belief. ऐसा कहाँ लिखा है कि ऐसे ही करना था. And because of these issues, institute realized we need some standardization. So part B का जो audit portion है, just to take you to module, just to give you the idea, this is part B, part 2, and from this ninth to 12th, 9, 10, 11, and 12, these four chapters are specifically, I would say, audit process. It's nowhere related to secretarial audit or GST audit or statutory audit. It's generalized audit process that whatever type of audit you do, these are the processes that you have to follow. So it's like a stepwise process. And trust me, I cannot deal with chapter number 10 without dealing chapter number 9. So it's more like a process. And if you have thorough understanding of 9 to 12, तो समझ लो आपका audit clear है. It's like sorted है. So ये 9 to 12 अगर दिमाग में settle हो गया ना, ये 5 चैप्टर अगर दिमाग में बैठ जाते हैं, 4 चैप्टर, सो आपका ऑडिट का पोर्शन समझ लो अच्छे से सॉर्टेड है. बिकॉज 60 में से आप ऑन एन एवरेज 35 जितना आप इसी में से अटेम्प्ट करने वाले हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ दिस चैप्टर. हम चैप्टर को बहुत ही आराम से स्लोली जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, the way we have a habit of writing any answer, for example, if something is asked about, let's say, from एनी सेक्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपको कोई इनकॉर्पोरेशन का कोई भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का कोई भी टॉपिक पूछ लिया, सो कैन आई से इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दिस इज हाउ वी राइट अकॉर्डिंग टू और परस्यूएंट टू सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 13. ऐसा उनको सिखाया गया है. If you know the section, right number. If you don't know the section, it's okay, ma'am. आप directly pursuant to provisions of Companies Act करके लिख सकते हो, right? This is what we have learned, and that's the way of, you can say, articulate your answer in such a way कि वो अच्छा लगता है. मैम थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लगता है. सो हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं. ये कोई मैनेजमेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, कोई सिंपल लैंग्वेज नहीं है. इसको आप लॉ ही समझो. एंड स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर नंबर 9 to 12 मेरा फोकस रहेगा. ये पोर्शन खत्म तो समझ लो इन अ वे ऑडिट खत्म. उसके अलावा ऑडिट के बहुत और चैप्टर्स है, लाइक सेक्रेटरी ऑडिट एंड ऑल, बट जो ऑडिट का मेन फाउंडेशन है, बेस है, वो यही है. So starting with the first chapter of our audit, that is chapter number 9, not going with the 8th, because 8th is again generalized chapter of different type of audits. मैं डायरेक्ट ऑडिट समझा रही हूँ कि पहले ऑडिट क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट सीखेंगे. सो चैप्टर नंबर 9, ऑडिट एंगेजमेंट. सो वी हैव समथिंग लाइक आईसीएसआई का दिया हुआ CSAS. मैम ये क्या है? ये है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. मैम व्हाट इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, आपने पढ़े भी है. सो व्हाई वी हैव सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स? बिकॉज मैम जो चीजें लॉ में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है, एंड इंस्टीट्यूट फील दैट एज वी आर चिल्ड्रन ऑफ इंस्टीट्यूट, आईसीएसआई जो हमारा मदर इंस्टीट्यूट है, अगर उनको लग रहा है कि उनके जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो कुछ ऐसे फॉलो करने चाहिए, राइट, then how they would come up with this? Because मैम लॉ में जो लिखा है वो थोड़ा कम है या प्रॉपर नहीं है, या उसमें लग रहा है कुछ लैकिंग है, तो हमको समझाने के लिए, सजेशन देने के लिए इंस्टीट्यूट लेके आती है स्टैंडर्ड्स. एंड सेम वे मैम ऑडिट का क्या? एंड इट्स लाइक यू कैन नॉट डू ऑडिट विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन, एंड इंस्टीट्यूट ब्रॉट 1, 2, 3 and 4, ये 4 स्टैंडर्ड्स लेके आई. एंड हमारा जो ये बुक है, ये जो चैप्टर है वो CSAS 1 पे है. ये जो चैप्टर है वो CSAS 2 पे है. दिस चैप्टर is CSAS 3 and this chapter is CSAS 4. So मैम CSAS 1, 2, 3, 4 ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है जिसको हमको लॉ ट्रीट करना है. अगर ये 4 स्टैंडर्ड्स क्लियर, तो ये चैप्टर भी क्लियर. आर वी हैविंग क्लैरिटी व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर फॉर? दैट इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स.
क्लियर, राइट? हम मैम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 9, जो किस पे डिपेंडेंट है मैम? CSAS1। तो मेरा फोकस भी क्या है? ओनली CSAS1। करें स्टार्ट। सो अब आते हैं CSAS1 पे। जस्ट CSAS1, and you can see something written: letter of engagement and responsibility of auditor and auditee. So मैम ये क्या है? So first of all, auditor, मैम कौन होता है ऑडिटर? द वन हु डज ऑडिट, हु इज गोइंग टू डू दैट ऑडिट। क्या मैंने एक भी बार बोला कि ये स्टैंडर्ड्स सेक्रेटरी ऑडिट के लिए? हैव आई सेड सो? एक भी बार नहीं बोला। सो कैन आई से दिस स्टैंडर्ड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट ओनली फॉर सेक्रेटरी ऑडिट? यस और नो? मैं सिर्फ सेक्रेटरी ऑडिट की बात ही नहीं करी, तो कैन आई से मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ मैम। ऑडिट, मैंने एक भी बार सेक्रेटरी ऑडिट नहीं बोला है, एंड मैं बोलूंगी भी नहीं। व्हेन आई वुड से दैट व्हाइल डीलिंग विद द चैप्टर नंबर 13, जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, उसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। बट राइट नाउ if I'm saying CSAS1, it is not about secretarial audit, it is about any audit. मैम any में क्या आएगा? काफी आएंगे, सारे नहीं आएंगे, काफी आएंगे, पर अभी वो अपना फोकस नहीं। क्लियर? यस? ओके, नाउ मैम CSAS1 में क्या है, आपको क्या याद रखना है? सो CSAS1 is about audit engagement plus responsibility of auditor प्लस ऑडिटी, जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं। दिस इज हैविंग पैरास। तो जिस तरह हम सेक्शन, सब सेक्शन, रूल, सब रूल बोलते हैं, वैसे हम इसको बोलते हैं CSAS1। उसके अंदर टोटल है 5 पैरास: पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 एंड पैरा 5। So all I'm trying to say is, if some topic और कोई question पूछा है, अगर वो पैरा 3 में से है, तो your answer will be like according to पैरा 3 of CSAS1। क्लैरिटी? क्लैरिटी? तो मैम नंबर्स याद रखना है? ऑफ कोर्स याद हो जाएंगे बहुत इजीली। यस, तो हमको याद रखना है मैम, ऑफ कोर्स याद रखना है। इजी है, बहुत ही इजी है, सिर्फ 5 पैरा है। करूं स्टार्ट ऑडिट स्टैंडर्ड से? फर्स्ट स्टैंडर्ड से करें स्टार्ट। सो अब आते हैं ऑडिट एंगेजमेंट पे। मैम एंगेजमेंट मतलब वही जो आपने सीखा है: ऑफर, एक्सेप्टेंस, consideration, I mean sorry, promise plus consideration becomes agreement, with the legal enforceability becomes contracts. Can I say audit भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है, कंपनी प्लस ऑडिटर के बीच का? So if you are a company, you came to me, I came to you, whatever way, we had a talk, हमने डिसाइड किया ठीक है मैं आपको ऑडिट करने के लिए रेडी हूँ। You said, okay, fine, let's enter into an agreement and humble request. Just one piece of advice before you know, enter in the market. Guys, we do lot of things on the basis of trust. But when it comes to profession, when it comes to market, even if you trust, it's good to have, you know, everything in a written mode. So अगर आपसे कोई एक फॉर्म भी भरवाने के लिए डील कर रहा है ना, जस्ट एक फॉर्म, दैट आप मुझे सिर्फ एक फॉर्म फाइल करके देना, DIR12, इट्स फाइन। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव वन लेटर, जिसमें आप अपना एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट हेडिंग दोगे, एंड आप उसमें जो भी काम आपने लिया है ना वो लिख लो, उसकी साइन करा लो, अपनी साइन कर लो। इन केस फ्यूचर में कल उसको कोई सस्ते में करके दे रहा है ना, स्टिल वो 2 बार सोचेगा कि आपको ना नहीं कर सकता, अग्रीमेंट ब्रीच हुआ है। ब्रीच मतलब यू कैन टेक एन एक्शन। पर अगर ऐसा कोई पेपर नहीं बनाया, यू केम टू मी टुडे, वी हैड अ टॉक, आई सेड ओके आई विल फाइल फॉर यू, नो प्रॉब्लम, एंड सेकेंड डे कॉलिंग में, सॉरी मैम हमको फाइल थोड़ा अभी छोड़ दो ना, कैंसिल किया है। कैन आई से आई वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग? इट्स मोर लाइक प्रोडक्ट आप देख के गए थे, कल डिसाइड किया नहीं खरीदना है। कैन आई से आई कैन नॉट डू एनीथिंग? एटलीस्ट अगर मेरे पास वो पेपर होता रिटर्न, आपके दिमाग में एक फियर तो मैं डाल सकती थी ना, सर यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट फाइन, आई कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट यू। ऐसे भी लीगल है, घर का ही खर्चा है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा होना नहीं है। कैन आई से समवेयर दिस विल मेक दैट सीरियसनेस। So आदत,
पहली चीज, मार्केट में कोई भी चीज डील करोगे बिना लेटर ऑफ एंगेजमेंट डील नहीं करोगे। लेटर ऑफ एंगेजमेंट जो एक ऑडिट का वर्ड है, अदरवाइज दिस इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड, आप जो भी बोलो। सो जो भी काम के लिए लिया है ना, यहाँ पे मैं ऑडिट की बात कर रही हूँ। सो यू नीड टू मेक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। इसमें बहुत कुछ लिखा होता है मैम, बहुत कुछ में एग्जैक्ट वर्क, दैट इज कॉल्ड स्कोप। मैम स्कोप सिंपली मीन्स एरिया ऑफ वर्क। मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, क्या करना है मैम, मेरा रेम्यूनरेशन क्या होगा, व्हाट टाइमिंग्स विल बी सूटेबल, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती। इफ यू आर गोइंग टू पुट एनी लिमिटेशंस ऑन मी, टेल मी बिफोर, टेल मी बिफोर। बहुत लोग होते हैं ऐसा, सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी बट दिस पर्टिकुलर बुक आई कैन नॉट गिव यू, दिस इज क्वाइट कॉन्फिडेंशियल फॉर आवर कंपनी एंड दिस आई कैन नॉट गिव फॉर ऑडिट। सर जी तो मैं इसको देख के बिना रिपोर्ट दे दूं, कल को इसी में फ्रॉड निकला तो आई विल बी इन प्रॉब्लम। So, ask them, is there any limitation? Is there anything that you feel, you're not gonna give me access for? So, ऐसा कुछ भी है, clarity लो। एंड ये सब कुछ कहाँ लिखा होना चाहिए? लेटर ऑफ एंगेजमेंट में। एंड दूसरा, responsibility. What are my responsibility? What are your responsibility? We have to have a clarity on that. कल को अगर आपको ऐसा बोले, सर आप ऑडिट करोगे ना, रजिस्टर भी आपको ही बनाना है, क्या ये मेरा ड्यूटी है? इफ आई एम द ऑडिटर फॉर यू। अगर आपका ऑडिटर एंड कंप्लाइंस मैनेजर सेम है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कैन आई से आई एम देयर टू चेक वेदर रजिस्टर आर प्रॉपर और नॉट। मैं रजिस्टर बनाने के लिए नहीं आई हूँ, तो कैन आई से वो जो एक प्रॉपर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो लॉ में लिखा है कि आपको ये करना है, दैट इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे आर एक्नॉलेजिंग इट। मैंने बोला सर आपने DIR 12 सॉरी 30 डेज में फाइल किया था, सर वो तो आप करोगे ना, हमने तो कुछ भी फाइल नहीं किया, तो फिर मैं ऑडिट किस चीज का करूँ? So point is just have a kind of acknowledging fact that sir ये आपका responsibility है, ये मेरा responsibility है, ये भी clarity में ले लो, because लोगों का कोई भरोसा नहीं है। So standard 1, 5 paras are going to give us the highlight of certain things, and this is all about audit engagement process para 1। I repeat, अगर आपके पास बुक है ये वाली, उसमें आप चैप्टर नंबर 9 पे जाके लिखना चाहते हो, कहीं पेपर जहां पे भी आपको ब्लैंक पेज दिखे, राइट, एक चार्ट फॉर्म बना लो जिसमें चार CSAS आएंगे, इट्स लाइक दिस। ऐसा कहीं पे भी एक बना लो जो आपको यूजफुल रहेगा, अलग से वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ बना लो जिसमें CSAS 1 आप लिख रहे हो, जो भी आप अभी लिखोगे CS 2 3 4 जब भी आएंगे। सो ऐसा एक चार्ट बना लो बुक में, जहां जगह मिले, जहां आपको इजी एक्सेस मिले। सो CSAS 1 आप लिखो, जिसका फर्स्ट पैरा क्या है, दैट यू शुड बी नोइंग पैरा 1, एंड दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट प्रोसेस। फर्स्ट पैरा, मैम ये क्या होता है? सो इसके ऊपर हमें केसेस भी करने हैं, क्योंकि ऐसा समझ लो ये प्रोविजन है और इसके ऊपर हमें टॉपिक देखना है। सो पैरा 1 क्या बोलता है? ऑडिट एंगेजमेंट प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई से इंटरनल ऑडिट, तो कैन आई से यू विल डेफिनेटली गो इन सेक्शन नंबर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर मैं ऐसा बोलूं मैम GST ऑडिट, आपका दिमाग सीधा GST में जाएगा, GST लॉ में जाएगा। अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑडिट, यू विल डायरेक्टली गो ऑन 148। अगर मैं बोलूं सेक्रेटरी ऑडिट, आपका दिमाग सीधा 204 में जाएगा, राइट? यस और नो? Because there are certain sections given. Yes or no? अगर मैं बोलूं foreign exchange related FDI audit, you'll go under FEMA. If I say labor audit, you'll go under labor law. So the point is, check, is there any applicable laws, rules, regulations? If yes, then check who's the appointing authority. Simple example, and one question to all of you: who appoints secretarial auditor? Who appoints secretarial auditor if applicable? Let's say मेरी कंपनी को ऑडिट एप्लीकेबल है, सो कौन अपॉइंट करेगा सेक्रेटरी ऑडिटर को? शेयर होल्डर्स, बोर्ड, हु? यस प्लीज, चैट बॉक्स, हु विल अपॉइंट? ओके, वन आंसर आई received. Okay, one answer I received, that board fails, then shareholders. Can I say ये जो point है, if board fails, then shareholder, this is something you have learned for statutory auditor, section 139. कुछ याद आया?
यस और नो? ये वाला चीज स्टेटरी ऑडिटर के लिए है। हाँ, वो मिक्स मैच हो जाता है, इट्स ओके, फाइन। सो द आंसर इज मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वन मोर थिंग, if you are having any fraud, let's say, in the company, और आपकी कंपनी गई है SFIO में, सुना है ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO सेक्शन 211 ऑफ कंपनीज एक्ट। यस मैम, SFIO में गया और उसको लग रहा है ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? SFIO। मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप पे डाउट है और उनको ऑडिट करवाना, तो कहना से ऑडिटर अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। मैम, NCLT को कुछ डाउट है एंड दे वांट टू गो फॉर इट, देन ऑडिटर अपॉइंट NCLT करेगा। यस और नो? यस और नो? मैम, गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेटरी ऑडिटर की बात चल रही है, तो कैट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हेलो मैम, अगर नॉर्मल सेक्रेटरी ऑडिटर की बात है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। मैम, स्टेटरी ऑडिटर की बात है तो हमेशा शेयर होल्डर्स करेंगे, राइट? मैम, फर्स्ट ऑडिटर की बात है अगर स्टेटरी ऑडिटर की, मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। सो कैन आई से, डिपेंडिंग ऑन द एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो ऑडिटर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, दैट कैन बी डिफरेंट। Yes. So, para 1 of CSAS 1 says that appointment of auditor will be done as per applicable law, rules, regulation, and that will be done by appointing authority. Here it's not mentioned board of director because we are not talking about secretarial auditor. We are talking about generally audit. And appointing authority depend करता है act पे. Second, you have to see the eligibility certificate. Can I say you have learned the provision where it is written statutory auditor cannot take more than certain number of audits? Yes. Can I say that? 20 से ऊपर ऑडिट नहीं लेगा वो। Right. Ma'am, this is something about statutory audit. What about secretarial audit or any other audit? Do we have any limits? Yes, we do. We do have that limits, and you have to give a certificate. See, now it's my responsibility. ये company का responsibility नहीं है. Let's say you are my client, I'm the auditor, we are signing letter of engagement, and you ask me, ma'am, are you eligible? I said, of course, yes. I'm CS. Yes, ma'am. Practicing ho. Huh. Okay. Ma'am, do you have enough number of audits already? No, I'm still having scope or place to, take one more audit. It's fine. ये सर्टिफिकेट मुझे देना पड़ेगा. If I give wrong certificate, fake certificate, then it's my responsibility. ये मेरे पे आएगा. Institute will definitely take action against me. इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है. They are not supposed to check. They are just going to take a certificate from you that you are eligible. So, as per para 1, I'm supposed to sign letter of engagement with the company, that is my client. Second, I'm supposed to give engagement letter along with the eligibility certificate. Third, एक बार आपके पास engagement letter आ जाए, उसके साथ साथ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन भी लेना, बोर्ड रिजोल्यूशन. सर, आर यू श्योर ना दैट यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड विद योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट मी? ऐसा नहीं हो कि मिस्टर ए आपको अपॉइंट कर रहा है, उधर डायरेक्टर जो मिस्टर बी है वो किसी और को अपने रिलेटिव को लेके आ रहा है, मिस्टर सी किसी और को ही लेके आ रहा है. दिस शुड नॉट हैपन. सो बी केयरफुल that you have board resolution copy where it is clearly mentioned, resolve that pursuant to section so and so, ABC and firm is appointed as our company secretaries and auditors. सो ये क्लैरिटी लेना. एंड लास्ट, कंटेंट्स. मैम, ऑडिट एंगेजमेंट जो होता है लेटर, उसमें लिखा क्या होता है, एग्जैक्टली exactly क्या लिखा होता है? चेक फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप. Why do you think I'm dealing with the paper number 3? I can deal with paper 4, 5, 6, any, no? पढ़ा तो मैंने सारा ही है. Can I enter in that territory? Yes, ma'am. Area of expertise, of course, number one. नंबर टू, मैम, यू कैन नॉट, अगर आपको ऐसे टेरिटरी और बॉर्डर लाइन नहीं देंगे ना, तो फिर आप किसी भी, अगर आपको मूड हुआ चलो आज दूसरा सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे तो मैम पूरा मिसमैनेज हो जाएगा. हाउ द अदर फैकल्टी वुड डील एंड व्हाई वुड यू डील द अदर सब्जेक्ट लीविंग योर सब्जेक्ट असाइड? सो पॉइंट हियर इज दैट वी हैव टू हैव बाउंड्री. आई शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग. जस्ट अ सेकेंड.
Okay, so hold on. Let me. Yeah. So see this. Readable. You see the picture first. So client asks, why did you do that? Project manager, moving the rock is not in our scope of work. Clarity? समझ में आ रहा है? Scope of work is important. Why so? Yes, can I say that photo is perfect example? कि clarity दे दो scope क्या है? Now you see, in a way, it's perfect. The way that project manager has dealt the thing, it's correct. Why? Because rock हटाना उसके scope में नहीं आता, and that is why we have to have clarity of scope. Sometimes what happens that I'm going to be paid 50,000, but I'm literally doing the work of 5 lakh rupees. Why? Because the scope level is not clarified. अगर आप scope clarify नहीं करोगे, then of course you will be end up doing something extra which is not relevant. So, and second thing for company also, it's really important that you don't have to access anything else. जिस काम के लिए आप आए हो प्लीज वही करो. आप किस ऑडिट के लिए आए हो? आप ये वाला ऑडिट करने आए हो, आईटी ऑडिट है ना, तो आईटी पे फोकस करो. Why you're thinking about marketing and all that stuff? So point here is that what is the real object of the audit and what is the scope of object, have clarity. Because of that only you are appointed, and once you're appointed उसके बाद आपको प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी जो बनाना है उसके लिए स्कोप और ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना. सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी, हैव क्लैरिटी ऑफ इट. Number three, written representation from management. Ma'am, what is this? Written representation of management simply means whenever I'll be having doubt, no doubt I'm taking this responsibility of doing audit. मैंने audit चालू भी कर दिया. Now I have questions क्योंकि books आपने बनाई है. मुझे क्या पता आपने क्या किया है? So I would come and ask for any doubts, any queries that I'll have, and you are supposed to reply me. पीरियड विद इन विच द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी गिवन, हैव क्लैरिटी. फिर ऐसा नहीं मैम हम इतना डिटेल में करेंगे ना कि हमारे जैसी क्वालिटी आपने देखी नहीं होगी. अच्छा, और कितना टाइम लगेगा? 3-4 साल में हो जाएगा. कैन आई से ऑडिट इज अगेन एन आर्ट जहां पे हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट. रिलायंस, रिलायंस की इतनी सारी ब्रांचेस हैं. अगर पूरे वर्ल्ड को काउंट करो, एक एक ब्रांच में अगर दिन के सिर्फ 100 ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं, वन डे के सिर्फ 100 ट्रांजेक्शन, तो ओवरऑल लाखों में हो सकते हैं ना इन अ डे. पॉसिबल ना कि 1 लाख+ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. नाउ थिंक अबाउट 365 days. पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन while डूइंग ऑडिट फॉर द 1 year, जिसका रिपोर्ट आपको कुछ मंथ्स में देना है. प्रैक्टिकली वाइबल पॉसिबल है? यस मैम, इम्पॉसिबल. हैव क्लैरिटी, रिपोर्ट कब तक देनी है. सो इफ यू डोंट हैव दैट डेट, how would you do audit? Then commercial terms important. Decide the remuneration. You cannot have percentage over here. ये ऑडिट है, ऑडिट में परसेंटेज. मैम रिपोर्ट क्लीन आई ना तो कोई पैसा नहीं. रिपोर्ट मॉडिफाइड या नेगेटिव आई या कुछ फ्रॉड मिला तो हम पैसे लेंगे. कैन वी डू दिस काइंड ऑफ डील्स? हेलो, पॉसिबल? ऐसा डील करते मैम? अगर रिपोर्ट क्लीन आई, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, तो आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा. कैन वी डू दिस टाइप ऑफ कंटिजेंसी टाइप ऑफ अमाउंट? It's legally not allowed. Be careful with that.
एंड लिमिटेशंस, कोई लिमिटेशन रखने वाले हो तो अभी बता दो. Sir, we are okay with everything. I'll tell you. Practically, this happened with one of my friend who was cost auditor, and you are well aware कि costing जो है वो किसी के पास वो रिपोर्ट भी पब्लिक में नहीं जाती. That report is just with the board of directors because costing है. कॉस्टिंग अगर रिलायंस की बाहर आ गई तो हर कोई कॉपी करेगा. सो कॉस्टिंग कभी बाहर नहीं आती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाहर आते हैं. दैट इज पीएनएल मैनेजमेंट. कॉस्ट शीट आपको किसी की भी नहीं मिलेगी. So that person was cost auditor, and while doing audit, there was one, code word type kuch tha that, एक code numbers the. So he asked, what is this material? And company said, I'm so sorry, but we cannot disclose this thing to you. This is confidential kind of thing जो हमारी प्रोडक्ट्स में यूज होती है और इसका हम आपको डिटेल्स क्लैरिटी कुछ भी नहीं देंगे. कैन आई से दिस इज नथिंग बट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. उसको ऑडिट करने से कुछ हद तक रोका गया. हेलो, आर वी टुगेदर? यस. ना व्हाट शुड बी डन? ऑडिट छोड़ देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? Now you have to decide as an auditor. Is it so important, मैम, कि इसके बिना ऑडिट नहीं हो सकता? No, ऐसा नहीं है. That friend of mine, he did audit, he completed audit with the remark that I am not aware about this code word. I don't know what is it because they are not allowing me to have access of this particular thing, and they mentioned that this is one of the confidential part of the manufacturing process and I do not have access of it, so I'm not doing audit of this. If anything comes out later on, I'm not responsible for the same. If you feel that this is not so important thing for audit, but at least give comment for your own safety. अगर लग रहा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो मना कर दो, तभी सॉरी सर हम ऑडिट नहीं ले पाएंगे. So this is para 1. I repeat, मैम, CSAS 1 क्या है? ऑडिट का स्टैंडर्ड. टोटल 4 स्टैंडर्ड है, उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड पे हमें लेटर ऑफ एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी. चैप्टर नंबर 9 है, नॉट चैप्टर नंबर 12. दिस इज चैप्टर नंबर 9, एंड इन दिस चैप्टर वी आर सपोज टू डील विथ CSAS 1 ओनली, जिसमें अभी तक सिर्फ हमने एक ही चीज किया, पैरा 1. आई एम गिविंग यू अगेन 5 मिनट्स. जितना आपकी स्क्रीन पे एक बार उसको वापस से चेक करो, रेफर करो. आई एम वेटिंग. जस्ट पैरा 1, नथिंग एल्स. Once done, raise your hand in the system. Yeah, you will get this. No, you don't have to write this. This way you will get it. At the end of the chapter, I'll give you this. Sure. Written representation, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो that as and when I'll be having doubt on anything as an auditor, so ma'am, who prepared everything? Management. I'll just go to management to represent me. Ma'am, please मुझे इसका clarification दो ना. So they will give me written representation on something that I want to know. It's more like clarification about certain matters. Clarity? Once done, let me know. ओके, जिनका हो गया हो, अब आते हैं हम चैप्टर पे. चैप्टर नंबर 9, ऑडिट एंगेजमेंट. गो ऑन दैट. Ma'am, for this subject, are we going to refer module? Yes, one of the easiest and best drafted book it is, right? इतना लंबा नहीं है.
नो डाउट काफी टॉपिक रिपीटेशन में, सो दिस फॉर दिस सब्जेक्ट ओनली दिस मॉड्यूल, 100% मॉड्यूल, वन वन लाइन पढ़ेंगे, कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। ओके, करें स्टार्ट। आ जाओ पेज नंबर 342 पे। मैम कुछ लिखना है, हाईलाइट करना, इट्स अप टू यू नाउ। नाउ यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट इन द बुक, और यू कैन जस्ट हाईलाइट विथ मी। करूँ स्टार्ट? सबने देख लिया वो पार्ट एक बार, पैरा 1। नाउ यू सी, आपको यहाँ पे ना पूरा पैरा एक साथ नहीं दिखेगा, आपको पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक साथ नहीं दिखेगा। हम भी पैरा 1 by 1 ही पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ पैरा 1 कराया है ऑफ CSAS1। नाउ यू विल सी द रेफरेंस। आप देखो बार बार यहाँ पे टॉपिक में कहीं पे भी कुछ आएगा, एंड इफ इट इज रिलेटेड टू पैरा 1, सो आपको पैरा 1 दिखेगा। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, if you're seeing any topic where it is written that whenever you take an audit you should be signing audit engagement letter, तो कहना से सीधा दिमाग में पैरा 1 आएगा, right? Appointing authority will appoint you, सीधा पैरा 1 आना चाहिए, right? There should be object and scope well defined, पैरा 1। So पैरा 1 is dealing this much. Now let's see in a detailed version कि बुक में क्या दिया है। So starting with this, focus here, audit engagement। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है मैम ऑडिट एंगेजमेंट का? सो आपको यहाँ पे काफी सेक्शंस दिख रहे हैं। 92 एनुअल रिटर्न, 138 internal audit, 139 statutory audit, 141 qualification, disqualification, eligibility of auditor, statutory auditor, 142 remuneration of auditor, 149 director, 178 nomination remuneration committee, 179 powers of board of directors, 204 secretarial audit। अभी याद आए ना? याद नहीं थे, आई नो, बट ये सेक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। Schedule 1 and 3 of Companies Act, can I say MOA, AOA? Schedule 2, कुछ याद? Oh, sorry, not Companies Act, it is about CS Act। And CS Act का Schedule 1 and 2 क्या है? कुछ याद आ रहा है? पेनल्टीज वाला मिसकंडक्ट, आपने पढ़ा है CS Act? हेलो, yes or no? Right. So this is about penalty and मैम और क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है? CSAS1। Now focus here, the word was regulatory framework। जब भी वर्ड यूज होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मींस ये चैप्टर कौन से लीगल फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। लीगल एज इन कुछ लॉ में है, कुछ रूल्स में, कुछ रेगुलेशन, एनीथिंग। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कंपनीज एक्ट पे बेस्ड है, CS एक्ट पे बेस्ड है, एंड थर्ड CSAS1 पे बेस्ड है। होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस CSAS1। Now coming on meaning of audit engagement, as I said, audit engagement is more like offer acceptance। So see, अगर आप ऐसा कोई बड़ा कंपनी हो like Reliance Tata and you feel that I want an auditor but directly हम किसी को भी जाके ऐसे नहीं उठाएंगे, so you are coming up with more like a let's say inviting people to give you more like offer, that if anybody's interested they can bid, more like टेंडर जैसा सीन है। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू बिकम ऑडिटर दे कैन सबमिट देयर बिड। सो आप इस तरह से भी इनवाइट कर सकते हो, और यू नो सम फर्म एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देम, और फर्म इज अवेयर कि इस कंपनी में ऑडिट वैकेंसी है एंड आई वांट टू बी ऑडिटर फॉर दिस कंपनी, दे कैन कॉन्टैक्ट यू इन एनी वे। सो 1-to-1 हुआ या टेंडर के थ्रू हुआ, जैसे भी अगर आपके बीच में अग्रीमेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑडिट एंगेजमेंट। एंड दिस एंगेजमेंट फॉर ऑडिट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट ऑडिट एंगेजमेंट। से an audit engagement is an arrangement wherein an auditor performs an audit of the transactions of auditee for which he has been engaged by the auditee। I repeat, it is an arrangement, okay? एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अरेंजमेंट है, फॉर व्हाट? टू परफॉर्म ऑडिट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शंस। किसके ट्रांजेक्शन में? ऑडिटी के। और हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑडिटी ने हमको अपॉइंट करा है। The audit engagement is a contractual arrangement by way of audit engagement letter which is signed between auditee and auditor। ICSI has issued CSAS1 auditing standard on audit engagement which is effective from 1st April 2021। It is actually effective from 19, but इसमें बार बार amendments आते गए, and that is how it is written 1st April 2021। That is the latest one। Audit engagement means, मैम engagement में करना क्या है? Have all the terms
and scope and remuneration and limiting condition, if any, clear. सो फ्यूचर में यू डोंट वांट एनी इशू. सो जो भी है अभी से अग्रीमेंट में लिख दो. इफ यू आर नॉट राइटिंग एंड देन आफ्टरवर्ड्स कमिंग विद some points, people won't listen to you. If you tell me that I'm supposed to do audit of corporate governance and अब suddenly तुमको कहते सर आप corporate governance कर रहे हो ना, साथ में environmental audit भी कर ही लो ना, ऐसे भी तो थोड़ा बहुत तो स्कोप में टच हो ही जाता है. सर सॉरी बट वो मेरे स्कोप में नहीं आता. जैसे वो रॉक वाला एग्जाम्पल था, परफेक्ट था. एंड जिसने भी ये किया बराबर किया, क्योंकि रॉक हटाना इज अ एक्स्ट्रा थिंग एंड दैट्स नॉट माय पार्ट ऑफ वर्क. अगर आपको करवाना है तो उसका अलग से पैसा लगेगा. सो एज अ प्रोफेशनल वन थिंग आई टेल यू, वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव हैबिट ऑफ गिविंग फ्री का एडवाइस. देते हो ना, चलते फिरते हम लोगों को एडवाइस देते हैं ना फ्री का. सच्ची सच्ची बोलना, ह्यूमन नेचर है, राइट? इफ somebody शेयरिंग समथिंग विद अस, जस्ट शेयरिंग, तो हम सुनते तो हैं पर उससे पहले एक एडवाइस रेडी होती है अपनी. हेलो. ह्यूमन नेचर है, क्या करे, एक आदत है फ्री की एडवाइस देने का. फर्स्ट थिंग टू लर्न, वंस यू बिकम प्रोफेशनल, अगर फ्री में एडवाइस दिया तो आपको पैसा देगा कौन? कहने से हमारे तो एडवाइस के ही पैसे हैं. कैन आई से दैट हम तो एडवाइस के ही पैसे दे रहे हैं. सो आज से फर्स्ट थिंग, कोई फ्री में एडवाइस नहीं. आई टेल यू, आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग फ्री का एडवाइजरी थिंग और कंसल्टेंसी अपने रिलेटिव्स को करते हैं. रिलेटिव्स को फ्री में दो तो बोलने का एक क्लाइंट ढूंढ क्या तो तेरे को फ्री. That is how your clientele ऐसे ही बनता है. So you can do things for free, I mean without money consideration for your relatives, for your family, whosoever. पर उनको बोलो फिर एक क्लाइंट ढूंढ के तो फ्री में करने का. सो मेक श्योर फ्री में एडवाइस हम नहीं देंगे और ना ही हम किसी फैकल्टी से फ्री में एडवाइस मांगेंगे. आई हैव सीन द स्टूडेंट्स coming up with the practical thing. I remember there are so many such situations. I should not be saying it, but then ऐसा होता है इधर मैम, वन ऑफ माई कलीग, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ दिस दैट रिलेटिव, पूरा सिचुएशन बोलते हैं व्हाट शुड बी डन इन दिस थिंग. सो मेजोरिटी टाइम क्या होता है ना कि मैटर ऑलरेडी किसी के पास होती है या किसी और प्रोफेशनल के पास होती है. सो आई ऑलवेज आंसर वेरी ऑफ कोर्स डिसेंटली that either you give me the matter, I'll be dealing with the in a professional way, the way it should be, or whosoever is dealing this matter already, out of that professional respect, आपने ये चीज सुना होगा that we do have that brotherhood or sisterhood kind of concept in the same profession, that I would respect you, you would respect me. मैं आपके क्लाइंट के साथ कोई भी डील नहीं करूंगी, आप मेरे क्लाइंट के साथ कोई भी डील नहीं करोगे. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर in professional field. So for example, I generally don't treat you like student. For me, you're not a student, you're soon to be professional colleague of mine. So मुझे आपको 3-4 साल के बाद या 2 साल के बाद रिस्पेक्ट करना ही है. So why not from today? राइट. सो आई डोंट ट्रीट यू मोर लाइक अ स्टूडेंट. अभी ठीक है, आधा सीएस बन चुके हो आप, बहुत जल्दी सीएस बन जाओगे, आज नहीं तो कल बन जाओगे. सो इफ यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट एंड इफ लेट्स से somebody is coming to me एज अ स्टूडेंट, अगर कोई मेरे पास आया एंड आपका क्लाइंट ऑलरेडी किसी और सीएस के पास है एंड जस्ट आउट ऑफ दैट कर्टसी कि चलो फैकल्टी हो तो आप एक उसको एडवाइस दे दो. जैसे ही मैं उसको एडवाइस दूंगी, कहना इससे वो एडवाइस पक्का वहां तक पहुंचेगी एंड मोर लाइक अ क्लैश ऑफ ओपिनियन एंड डिसरिस्पेक्टिंग द अदर प्रोफेशनल हूज ऑलरेडी डीलिंग विद इट. उसको भी आता है, वो भी पास ऐसे ही नहीं हुआ है. Yes? So, humble request. One thing. In case if you'll be coming up with the questions, doubts, happy to help, always open to help. But if you're coming up with any practical matter which is a market oriented thing, I would never give you an opinion. Yes? Unless it is a professional term. Clear? So doubt लेके आना, matter लेके नहीं. So, question, नीचे question लिखा हुआ है. CSAS is mandatory for all the audit engagements accepted on or after. Answer is 1st April 2021. Question, what is the scope of CSAS 1 and what does it deal with? Answer पढ़ो, पता है आपको already. Yes, can I say it is about audit engagement and the duties of auditor and auditee, deciding the scope. Clear? करें start offer and acceptance से.
Shall I? Okay, check. Offer for the audit engagement. As I said, that it's not always that company is trying to search you. It can be like you searching company. For example, अगर मुझे पता चला, let's say अभी की बात करें, for example, Hina and Isha, classmates. Hina ने decide किया I want to go for practice. Isha ने decide किया I want to go for a job, and Isha is working in one of the company. एंड उस कंपनी में जो सीएस ऑडिट करता था, अभी अभी रिसेंटली उसने रिजाइन किया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर रीजन. एंड ईशा को याद आया हीना इज माय फ्रेंड एंड शी इज इन प्रैक्टिस टू. उसने उसको कांटेक्ट किया, मेरी कंपनी में वैकेंसी है, रिसेंटली वन ऑफ द ऑडिटर लेफ्ट, सो इफ यू वांट टू डू ऑडिट यू आर मोर देन वेलकम, ट्राई फॉर इट. सो कैन आई से इस सिचुएशन में हीना इज गोइंग टू अप्रोच कंपनी? Yes, getting the situation right. This is one situation when auditor is trying to approach company to find a client. Second thing, ma'am, company को auditor चाहिए, and ABC Limited is looking for the auditors for, let's say, स्टैम्प ड्यूटी के कोई मैटर्स के लिए ऑडिट चाहिए, और ज़्यादातर स्टैम्प ड्यूटी का काम बहुत कम लोग करते हैं. सो यू नो वन ऑफ द वेल रिनाउंड फर्म जो स्टैम्प ड्यूटी का काम करती है, और कंपनी की नजर उसी फर्म पे, ऑडिट तो इनसे ही करवाना है. सो कैन आई से इन दिस सिचुएशन इज लाइक कंपनी गोइंग टू अप्रोच दैट ऑडिटर? इट कैन बी एनी सिचुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता. और थर्ड, इट कैन बी लाइक कंपनी बहुत बड़ी है मैम, ऐसे ही किसी को नहीं उठाती, वो सीधा टेंडर वेंडर लेके आएगी, बिड भरो, हम चूज करेंगे, थोड़ा तामझाम काइंड ऑफ. So it can be in any situation. At the end, all we have to do is like when you have a meeting, when you have a discussion, at the end, are you entering into contract? That's the thing. If yes, then sign audit engagement letter. Check. The offer for audit engagement may be initiated either by auditee or by auditor. Any situation. However, it is necessary. What is main thing that is it is necessary that engagement are accepted by auditors, and auditor fulfill various criteria for acting as an auditor. तो मैम क्राइटेरिया है, ऑफ कोर्स क्राइटेरिया. IUCS ये तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया. प्लस अगर हम सीएस, क्योंकि देखो अब पूरी बुक में आपको ऑडिटर ऑडिटर जनरलाइज मिलेगा, बट कैन आई से ऑफ कोर्स मैं सीएस की ही बात कर रही हूँ पूरी बुक में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिटर. हम किसी सीए की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम सीएमए की बात नहीं कर रहे हैं. सो सीएस की ही बात कर रहे हैं, बट सीएस एक नहीं बहुत सारे ऑडिट करता है. फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट, मैम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ऑडिट, मैम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का ऑडिट, ऑडिट तो बहुत सारे, स्टॉक ब्रोकर की ऑडिट. सो वी हैव इनफ ऑडिट्स. अब बात ये है मैम, if I'm CS, yes. Practice में हो, do you have COP? Active COP है, that is certificate of practice. Of course, मैम है तो ही कर रहे हैं ना. दूसरा eligibility है. मैम what is eligibility? Like number of audits. And अब आपको नया पता है कि नहीं पता है, soon हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, उसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है. Just for your knowledge, if you are aware, peer review. हाँ या ना, आइडिया है? Peer review. Yes, no? Okay. What is peer review? So it's like a process coming from ICSI, and if you are a practicing professional, आपको अपनी सर्विसेज कैसी है, आप क्वालिटेटिव सर्विस दे रहे हो कि नहीं, आपको अपनी फर्म का पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा. व्हाट इज पीयर रिव्यू? अदर सीएस, आई मीन यू आर सीएस, one more CS will come to your office, check the way you deal with your client, check the way you work. उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के इंस्टीट्यूट को देगा, इंस्टीट्यूट आपको देगा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, दैट वाज द लास्ट जो दिया था ना ईयर, वाज 2023. वो ऑलमोस्ट वो डेट जा चुकी है. 1 अप्रैल 2023 वाज द लास्ट डेट. अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कंपलसरी है सबके लिए that only and only peer reviewed firm can do audit. So can I say ये क्राइटेरिया हो गया अगेन टू बिकम ऑडिटर. सो मैम आप सीएस हो, हाँ. सीओपी भी है, हाँ. एलिजिबल भी हो, हाँ. पीयर रिव्यू करवाया, नो, तो नहीं कर सकते ऑडिट. सो यू हैव टू सी दिस क्राइटेरिया. एन ऑडिटर आइदर
appointed either as a result of one-to-one communication or through the tender process, as I mentioned. सो वन टू वन में क्या होगा, यू मैट मी आई मैट यू वी टॉक्ड, खत्म. मैम टेंडर में क्या होगा, कहीं न्यूज़पेपर में ऐड देखा, टीवी में देखा, कहीं ना कहीं देखा था दे नीड ऑडिटर्स, आई अप्लाइड, मेरे जैसे 10 और लोगों ने अप्लाई किया, मेरा बिड सिलेक्ट हुआ, एंड देन आई एम हैविंग वन टू वन मीटिंग. क्लैरिटी, क्लैरिटी. So this is how auditors are appointed, जिसमें आया offer plus acceptance becomes promise plus consideration become agreement. So एक case study दिया हुआ है, check. PQS company, a trading company, is looking for an internal auditor for the year 2022-2023. The company sends an email to, तो कहने से यहाँ पे ये वाला situation है. Auditor is approached by auditee. कहने से कंपनी सामने से फॉर्म को कांटेक्ट कर रही है. Yes. Outlining the scope of audit and the time frame for completion, the audit fees and other terms. So उसमें क्या लिख के भेजा मेल में, चेक करो, just for your reference. This is not question, just for your reference. I'm waiting, check. Done? Now you see, for example, if I'm getting that email and I'm interested to do, then how I should be writing acceptance. So check. ABC and Associates reviews the offer and responds with an acceptance that includes any additional comments or something that they want to add. Check. Thank you for offering us this internal audit engagement. We are pleased to accept this. आपने जैसे ये रिटर्न मोड में लिखा, तो कैन आई से एक्सेप्टेंस. सीखा था ना कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दैट थ्रू पोस्ट और थ्रू लेटर और थ्रू टेलीफोन, जैसे चाहो आप अपनी कन्वीनियंस से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर सकते हो. चेक दिस पैरास एज वेल. आई एम वेटिंग. And this is just for example, not for, you can say, exam point of view, just an example given. Once done, let me know. Okay.
Clarity, everyone. जाएं आगे. Okay, now check. In case the auditor is appointed by management on one-to-one basis. So now we have two things. Number one, ma'am, either this appointment is one-to-one basis or this appointment is based on tender process. दोनों में से जो भी प्रोसेस है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ चीजें कॉमन रहेंगी. तो देखो आपको यहाँ पे दो दे रखे हैं. Here, check. This is a summarized version. Book में से भी check करते हैं. So method of appointment of auditor, it can be one to one or it can be tender. So one to one में क्या होगा? Screening of auditing, for example, it's like uh, if I'm deciding to accept it और मेरा direct बात हुआ है, मैंने approach किया, company ने approach किया, doesn't matter, no difference. I see that. Do I have enough, experienced people to deal with this company? For example, मैम हमने ऑडिट तो बहुत किए बट मैम आईटी कंपनी का कभी ऑडिट नहीं किया है. मैम हमने ऑडिट तो बहुत किए पर मेरा नॉलेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इतना नहीं रहा है. मैम सर्विस इंडस्ट्री कंपनी का हमने कभी ऑडिट नहीं किया. सो डू यू हैव इनफ पीपल हु कैन डील विद इट? सो आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास वो कैपेसिटी है. सो यू हैव टू डू दैट स्क्रीनिंग कि मैम इसका काम कितना है. अगर यस भी बोलना है तो मुझे डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कंपनी कैसी है. ऐसा नहीं कि कंपनी, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी कंपनी जिसपे काफी चार्जेस लगे हैं, कहीं ना कहीं केस लगते रहता है उन कंपनी पे, ऐसी कंपनी के साथ अपना नाम जोड़ना, कैन आई से यू कैन ऑल्सो बी इनटू इशू. सो बी केयरफुल कि कंपनी आप सोच समझ के एक्सेप्ट करो. सो फर्स्ट, स्क्रीनिंग ऑफ ऑडिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑडिटी. सेकंड, कम्युनिकेशन ऑफ विलिंगनेस. यू वांट टू डू दिस ऑडिट, communicate your willingness that sir I'm interested, right? Have a pre-engagement meeting. Don't directly say yes. Have a pre-engagement meeting. Have a clarity. What would be amount? कब काम कर पाओगे? कैसा कन्वीनियंस होगा? समटाइम कंपनी ये नहीं बताई आपको कि इसकी 5 और ब्रांचेस है जो अलग अलग सिटी में है. सो यू मे हैव टू ट्रैवल फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट. So have this clarities from well in advance. Otherwise, it will lead to troubles. So pre-engagement meeting, सब कुछ सही गया, then sign, give your eligibility certificate to them that sir, my audit limits are well within the limits, I'm not crossing any number of audit, I'm eligible. So आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. इफ दिस इज वन टू वन. मैम ये टेंडर वाला सीन रहा तो सिर्फ एक बिड देनी पड़ेगी, बाकी का सब कुछ सेम ही रहने वाला है. चेक फर्स्ट, प्री बिड मीटिंग, टेक्निकल बिड सबमिट करो. सो पहले अगर आपको चाहिए तो हैव अ मीटिंग बिफोर सेंडिंग योर बिड. once you have sent your bid and it is accepted, then it is more like a contract. उसके बाद आप जा सकते हो प्री एंगेजमेंट मीटिंग पे to have more clarity, and finally sign and give certificate of engagement. So first one to one. So first of all, if the auditor is to be appointed by management on one to one basis, following steps will be taken. Number one, selection or screening of prospective auditee based on following things. Check. आपको ये क्लाइंट एक्सेप्ट करना है. इफ यस देन सी, मैम ये क्लाइंट कैसा है? लेवरेज क्लाइंट है, हैबिचुअली लिटिगेंट क्लाइंट. मैम व्हाट इज दिस? जिसके ऊपर लिटिगेशन चलती रहती है, रोज इस पे कोई ना कोई नया केस आता है. मीडिया में काफी ये कंपनी हाईलाइट में रहती है फॉर रॉन्ग रीजन. अगर पॉजिटिव रीजन रहा होता तो फाइन. सो डोंट ट्राई टू टेक सच क्लाइंट कि वो आपकी इमेज भी खराब कर दे. प्लेजिंग द शेयर्स बाय द प्रमोटर ग्रुप. सो मैम ऐसा कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो अपने खुद के ही शेयर्स प्लेज कर रहे हैं, आप क्या ही ट्रस्ट करोगे? सो इफ दिस एनी ऑफ सिचुएशन दैट यू फाइंड इज नेगेटिव, then you decide whether you want to. See, book is not telling you don't take it. Book is just telling you consider these points. Number two, performance risk, capacity, resources. Do you have enough resources who can do this? Engagement, contract risk. इसको एक्सेप्ट करने से फायदा कितना है, नुकसान कितना है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख लो. रेपुटेशन पे तो नहीं आएगी ना. देन कमर्शियल्स, इज इट मॉनेटरी लेवल पे बेनिफिशियल है? अमाउंट क्या देंगे आपको? Once if you are clear with this screening part that yes ma'am, I feel everything is positive, I can take this audit, okay. Second, communicate your willingness. Have a pre-engagement meeting, and once you have that, give your certificate of engagement that I'm ready and I'm accepting. दोनों sign करोगे. So pre-engagement meeting में मैम डील करना क्या है? Everything about audit, जैसे कि terms, प्रायर ईयर ऑडिट रिजल्ट क्या था मैम, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं कि नहीं.
understand their environment, their internal control system, design, operation, audit process, everything. Check this para. So this is something that is going to give you idea that आपको कंपनी में क्या क्या जानना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, सी, एक आपने डायलॉग सुना होगा कि जब तक पानी में कूदो नहीं ना तब तक पता नहीं चलता कितना डीप है. यस और नो? सो डू यू थिंक आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी पूछ लो, आपने शायद सी एस के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी, सच्ची सच्ची बताना, एग्जीक्यूटिव में एंटर करने से पहले कभी थोड़ा भी 1% भी प्रॉपर आइडिया था कि सी एस है क्या? क्या ना, इसे पढ़ने के बाद ही पता चला कि मैम इसके अंदर इतना डिटेल्ड है? यस और नो? सो प्रैक्टिकली टिल यू एक्चुअली एंटर इन टू दिस यू नेवर नो. सो वन थिंग आई वुड से, कोई कितना भी बोल दे दैट मैम ऑडिट लेने से पहले या कोई एंगेजमेंट लेने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू नो थिंग्स. आई कैन, बट ऑल आई get to know, or all the information that I'll be given, it is just going to be something जो अवेलेबल है पब्लिकली. अंदर का तो मुझे एक्चुअली साइन करने के बाद और ऑडिट चालू करने के बाद ही पता चलेगा. सो दिस आर सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच आर पब्लिकली अवेलेबल. इट्स मोर लाइक अ गटफुल डिसीजन, एक्सेप्ट करने के बाद ही पता चलेगा. सो चेक स्टेप 3 का पैरा. आई एम वेटिंग. एंड वन मोर थिंग, यू नेवर नो कि आपका जो भी डिस्कशन चल रहा है प्री मीटिंग के साथ या वॉट एवर सिचुएशन इज देयर, इट्स क्वाइट पॉसिबल मैम वी कुडंट रीच ऑन अ कंक्लूजन, वी कुडंट अराइव ऑन अ पॉजिटिव नोट, एंड हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. लाइक आई एम नॉट टेकिंग द ऑडिट, इट्स फाइन. But that doesn't mean you will disclose everything what you got to know about this company, during this process. So you are somewhere bound by confidentiality agreement. Are you aware about the term, जो आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा है, कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें क्लाइंट एंड सॉलिसिटर, दैट इज एडवाइजर, उसके जो भी कम्युनिकेशन है उनको प्रिविलेज्ड माना गया है, दैट यू कैन नॉट डिस्क्लोज unless and until client waives it, that it's okay, you can disclose, I'm okay, right? Otherwise it is treated as a privileged one. If done with the step 3, step 4, that you have to sign the agreement and give your certificate of eligibility. Part B जो है इसका, that is tender process, it's one and the same. The only difference is here you have to first, have a meeting before giving your bid and then give bid. Bid देने के बाद अगर आपकी bid select हुई, then you'll have a one to one communication. अगर bid select हुई नहीं तो खत्म. सो जो कंपनी बड़ी है साइज में मैम, एक रेपुटेशन है, सो वो ये सब करेंगे जस्ट टू रिमेन इन हाईलाइट दैट दे वांट टू गिव ऑप्शंस टू सो मेनी पीपल who wants to become auditor here. Check 1 2 3 4 step, it's almost same. I'm waiting. And उसके बाद जो बॉक्स दिया है, it is about the eligibility certificate. मैम eligibility certificate का मीनिंग क्या, वो हम बाद में देख रहे हैं. चेक स्टेप 1 2 3 4.
Sure. Technical bid simply means that if I have a meeting with you, we discuss certain thing, the basics, कि आपकी company का क्या सीन है. See, because I would not directly give you bid without knowing about you. Because एक बार मैंने bid दे दी और आपने accept कर ली, can I say bid का acceptance itself is a contract? बिकॉज मेरा बिड था वो ऑफर था आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट सो आई विल बी बाउंड बाय इट सो कैन आई से बिफोर गिविंग दैट बिड टेक्निकली गिविंग दैट बिड हैव प्री मीटिंग सो टेक्निकल बिड का मतलब है दैट यू विल टेक्निकलिटी के साथ दैट इज विद द प्रोसीजर यू विल गो विद द बिड दैट इज टेक्निकल बिड क्लियर दैट मीन्स फॉलोइंग द प्रोसीजर टू गो फॉर अ बिड आर वी क्लियर सो फार विद द स्टेप 4 Okay, now this one is common for both of them. That is वन टू वन हो या टेंडर हो क्या फर्क पड़ता है मैम दोनों में ही आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मैम हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को हम जनरली तो हम समझ गए दैट यू आर सीएस हैविंग प्रैक्टिस along with that you are not crossing the limits of audit so मैम legally उसमें क्या है so check करो the auditor shall furnish a certificate to the appointing authority, that is whosoever appointed you, and appointing authority will differ from case to case. So उसमें आपको क्या देना है number of audits are within limit, no conflict of interest, आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मैम ये नहीं समझा पैरा 3 ठीक है वो बात की बात है अभी हम पैरा 1 में ही है so you have to just inform that you are not having any conflicting interest there is no restriction to render प्रोफेशनल सर्विस अंडर आईसीएसआई गाइडलाइंस सो आई एम नो वे रिस्ट्रिक्टेड कहीं कुछ आपने कांड किया होगा एंड इंस्टीट्यूट टुक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू एंड स्टॉप्ड यू फ्रॉम गिविंग एनी ऑडिटिंग सर्विस देन यू कैन नॉट सो यू हैव टू गिव वन सर्टिफिकेट वेयर इट विल बी रिटर्न दैट आई एम अलाउड टू गिव दिस सर्विस एंड ही इज नॉट डिबार्ड by disciplinary mechanism of ICSI आपको कहीं पे भी restrict नहीं किया हुआ है so you will be giving one certificate affecting this 4 conditions if it is given then only you are allowed मैम ये गलत सर्टिफिकेट दे देते हैं ना फेक दे देते हैं क्या फर्क पड़ता है मैंने लिख दिया कि वेल विद इन लिमिट है जबकि लिमिट में नहीं है then you are liable company is not responsible to go and do background check क्योंकि वो आप ही बता सकते हो clear clarity with the first part how about appointment of auditor and just a second coming on the next part leave everything aside step by step जाएंगे प्री कंडीशन ये सब बाद में करेंगे अभी आओ अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे as I mentioned just to explain you again if I talk about statutory auditor मैम statutory auditor को कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स एज पर सेक्शन नंबर 139 मैम सेक्रेटरी ऑडिटर हो तो 203 मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैम कॉस्ट ऑडिटर हो तो 148 मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैम if central government is making this audit ordering this audit then central government will be the appointing authority मैम गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय कैग मैम एनसीएलटी ऑर्डर कर रहा है ऑडिट तो एनसीएलटी विल बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैम फ्रॉड की सिचुएशन है जस्ट टू अनकवर सो मेनी थिंग्स audit was ordered so SFIO will be appointing authority so point here is that appointing authority will differ from case to case and here I am not talking about secretarial audit I am talking about audit अब audit में कौन से टाइप का ऑडिट है अकॉर्डिंगली अपॉइंटिंग अथॉरिटी बदल जाएगी सो चेक अपॉइंटिंग अथॉरिटी नाउ अगेन गोइंग बैक टू पैरा 1 इफ यू सी पैरा 1 में एक पॉइंट था जस्ट वन लाइन एप्लीकेबल लॉस रूल्स रेगुलेशन बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी राइट सो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है एज पर लॉ अपॉइंट किया है बट कैन आई से लॉ में जितना लिखा होता है एक्सप्लेनेशन उससे ज्यादा बड़ी होती है हमेशा यस मैम पैरा जो है वो प्रोनाउंसमेंट्स है आईसीएसआई ने प्रोनाउंस किए हैं और पैरा में बहुत कुछ नहीं दिया है पर उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स आपको मिलेगा बहुत लंबा अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे चेक द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मींस अ पर्सन हु इज अपॉइंटिंग द ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑडिटिंग अंडर द स्टैट्यूट दैट इज लॉ कुड बी कंपनी हो सकती है एलएलपी हो सकती है आप पार्टनरशिप का ऑडिट कर सकते हो डिपेंड जैसे इनकम टैक्स ऑडिट में पार्टनरशिप भी कवर्ड है अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑडिटी in case audit is company then appointing authority will be board of directors or maybe shareholders and in the case
as the case may be. And in other cases, it can be other people, those who are entrusted with the responsibility of governance. So, मैम एक वर्ड नया सिखा रही हूँ, TCWG. What is this? ये ऑडिट का एक शॉर्ट फॉर्म है. That is those charged with governance. जिनके हाथ में गवर्नेंस है, जिनके हाथ में कंट्रोल है. सो कैन आई से LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड द अदर पार्टनर्स आर TCWG. कंपनी में डायरेक्टर्स आर TCWG. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है वही TCWG है, द वन हु इज चार्ज्ड विद गवर्नेंस कंट्रोल. Yes. So if it is company, generally it is director. If other, then depends. Further, the appointing authority maybe can be court, tribunal, or sometime even regulator or officer thereof. So एक case law दे रखा है. Check. In case of Kingston Cotton Mill, the case involved a dispute between the shareholder and the director over appointment of auditor. The shareholder had passed a resolution to appoint auditor, but director refused to comply, and court held that shareholders of the company do have a right to appoint an auditor and that the director of the company cannot interfere with this rights. And अगर आप देखो तो ये जो केस दे रखा है फॉर द अपॉइंटमेंट है, अगर law itself is giving you right to appoint auditor, then nobody can take that right away from you. So यहाँ पे of course shareholders के पास statutory auditor appoint करने का right है. अब आपको पैरा का इफेक्ट दिखेगा एंड दिस एग्जांपल्स दैट आई वाज गिविंग. अच्छा, वन मोर थिंग मैम, कंपनी अगर CIRP में गई हुई है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, कैन ऐसे इंसॉल्वेंसी की पूरी प्रोसेस IP के कंट्रोल में होती है. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, हेलो पढ़ा है ना थोड़ा बहुत. यस, IP के कंट्रोल में होती है. तो मैम उस टाइम पे अगर ऑडिट करवाना पड़ा, देन हु वुड बी द अथॉरिटी? IP. Now you check. I'm just highlighting the example. Section 139 स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहा है. मैम अगर ऑडिटर की बात करें, इट्स ऑलवेज शेयर होल्डर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर ही करते हैं. बट मैम कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो AGM तो होगी नहीं. तो कब? तो 30 days में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है मैम? हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. नेक्स्ट मैम, सेबी में अगर अपॉइंटमेंट हो रही है ऑडिट की, देन हो. मैम नेक्स्ट, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अथॉरिटी अपॉइंट कौन करेगा, देन अकॉर्डिंगली. मैम अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रही है, देन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा. मैम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर दिया हुआ है तो वो करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो कौन करेगा मैम? डायरेक्टर. एंड टाइप ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी बोर्ड, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मेंबर्स, सेक्रेटरी बोर्ड, इंटरनल बोर्ड, CIRP, RP, liquidator and tribunal, then tribunal, depository participant, then director or designated partner. If it is LLP, then DP. Internal auditor of stockbroker, depend. So the point is, I cannot give you one line answer that appointing authority हमेशा board of director होता है. Can I say depend कि आप कौन से auditor की बात कर रहे हो? Open ended answer. Yes or no? So जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो सारे के सारे यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलेंगे with the reference. Can you see? CSAS1 appointing authority. Yes, check this para. I'm waiting. Check till here.
So it is written depends upon the type of auditee. So for example, if you are a stockbroker and who's sole proprietor, if you are a stockbroker, if you are LLP, तो can I say again appointing authority differ कर जाएगी because ये सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं है. देखो ब्रोकर्स तो इंडिविजुअल भी होते हैं, पार्टनरशिप वाले भी होते हैं, कंपनी भी होती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो उनका जो TCWG होगा, दैट पर्सन वुड बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी. दैट इज वाई नो स्पेसिफिक अथॉरिटी इज गिवन. क्लैरिटी? And those who are done, go with this case law. Check. Done? Shall I read the case law? Just raise your hand in the system if done. Okay, fair. Sun Moon Limited is a listed company and operates in manufacturing sector. In January 2023, the company received a notice from SEBI stating that Sun Moon Limited had failed to comply with the several provisions of SEBI LODR. SEBI notice also required the company to appoint PCS to conduct secretarial audit of its records and submit a report to SEBI. The board of directors of Sun Moon have decided to appoint Messrs. PR and Associates (PCS) to conduct secretarial audit and pass the resolution in board meeting. However, Mr. Abhinav, of shareholder of the company, challenged the appointment of this auditor, secretarial auditor, in the court, stating that the board did not have authority for the appointment of auditor and that the appointment should have been made by SEBI. The matter was referred to court, and court examined the regulations and found that regulation did not specify who had the authority. However, court noted that regulation required secretarial auditor to be appointed by company to conduct the audit. So based on this finding, the court ruled that board of directors had the authority to appoint. So basically अगर एक्ट में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है, रेगुलेशन में लिखा हुआ है that company can appoint, अब कंपनी का मतलब क्या हो जाता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर, राइट? इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटिंग, ग्रेट. इफ समवेयर स्पेसिफिकली मेंशन कि सिर्फ शेयर होल्डर कर सकते हैं, शेयर होल्डर लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिटर में. सो यहाँ पे ऐसा पॉइंट लेके आना कि सेबी को अपॉइंट करना था, नो, इट इज नॉट मेंशन दैट सेबी विल अपॉइंट योर ऑडिटर. सो कैन आई से कंटेंशन ऑफ मिस्टर अभिनव इज नॉट एक्सेप्टेबल? कैन आई से दैट सेबी ने आपको खाली नोटिस भेजी है कि भाई जो भी गलत है वो रिपोर्ट करो, ऑडिट करवाओ. ये नहीं बोला है ऑडिटर भी हम अपॉइंट करके देंगे. आर वी क्लियर? So case on appointing authority. Clarity everyone?